It's November and you are all in end game now. अरे क्या हुआ? Why so stressed? एक्चुअली आई कंप्लीटेड गेट इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस बट धीरे धीरे मैं सब भूल रहा हूँ। Oh, okay. This happens with everyone, so a proper revision is required. Let me discuss complete details with you. It's November and you are all in end game now. As the GATE exam for all branches is scheduled to be completed by 16th Feb 2025. It's time to revise all the subjects smartly. I believe you have completed your coursework by October and have been serious for the exam from the start of your preparation. If you are one of those looking for shortcuts like crack GATE in 2 months or 3 months, this video isn't for you. That's a separate topic. This video is for those who started their preparation at the right time, focused on all subjects thoroughly, and are now done with their academics. From here on, your goal should be to sharp your concepts, practice more, analyze thoroughly, and learn from your mistakes. This line covers the entire revision strategy. Let's break down it. So number 1 is sharpen your concept. You already covered the syllabus and made long notes. Now you must revise all the subjects again and take the short notes. Why short notes? Because just few days before exam, you can't read the whole long notes. That's why short notes should be such that they presents you the basic idea of complete subject and includes the all important formulas. Don't do the mistake to buy short notes. Prepare it by self while reading your long notes first time. क्योंकि जब आप खुद की समझ से शॉर्ट नोट्स बनाओगे, मतलब लॉन्ग नोट से शॉर्ट नोट्स एक्सट्रैक्ट करोगे, तो आपके दिमाग में चीजें ऐसे फिट होंगी कि वो एग्जाम तक तो नहीं ही निकलेंगी। सेकेंड फोकस ड्यूरिंग रिविजन इज प्रैक्टिस मोर, एनालाइज थॉरली and learn from mistakes. Just pick one test series and start giving chapter wise test first. Then shift to subject wise test, and once you are done with them, pick full length test and previous 10-year papers. Make sure to analyze the test before shifting to next one. अब यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, that means अच्छा लगा है, इसलिए अगर चाहो कि दोस्तों के भी अच्छे नंबर आ जाएं, तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है कर दो. डू द एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी गिवन टेस्ट एंड नोट डाउन द मिस्टेक्स, जिससे आप फ्यूचर में एग्जाम के जस्ट पहले जब अपना एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप की गलतियां आपसे हो जाती थी. वन मोर पॉइंट, you should complete the chapter wise test series at the time when you were first reading that chapter, so that it is not left for the final revision time. तब जब आपने उस सब्जेक्ट के लेक्चर देखे थे, उसी टाइम पे आपको चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं वो दे देने चाहिए थे. लेकिन अब नहीं किया है तो अभी कर लो, और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट पे शिफ्ट कर जाना, और अगर पहले कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है. इन दिस वे यू विल कंप्लीट द टेस्ट सीरीज, एनालाइज द मिस्टेक्स एंड नोट देम, सो योर रिवीजन इज कंप्लीटेड. नाउ 1 week बिफोर द एग्जाम, फोकस ऑन रीडिंग योर शॉर्ट नोट्स एंड रिव्यूइंग योर टेस्ट पेपर एनालिसिस. अभी जो आपने मिस्टेक नोट करी थी उनको जरूर एक बारी देखना. रेफर टू योर लॉन्ग नोट्स ओनली व्हेन यू आर अनेबल टू रिकॉल अ टॉपिक completely, especially as the GATE exam approaches. That's it for the video. The same revision strategy will work for electrical, CSC or any other branch. We can discuss further in the comments. And I would love to know how your revision is going. Have you started already? If you started, then how it is going? Let me know in the comments.